learners, welcome back to the channel Economics at Ease. Hope you all are fine and doing your best and preparing for your exams. Okay, now here I have come with you can say a very small video that contains only 80 most expected questions with solutions, last minute revision that you can say the MCQ type, okay? But one word answer I have given after the question, okay, there itself. So you can go through that. First of all, the national income means. Define national income. It is from the chapter. 1 to 20 questions are from national income. Meaning here, define national income in one word. It is a sum of factor incomes earned by normal residents in 1 year. Then difference between GDP versus GNP. That is, GDP is domestic and GNP is equals to GDP plus NFIE. Okay, gross national product. Then difference between real versus nominal. Here we know the main difference is real is calculated at the basis of at constant prices, whereas you can say nominal at current prices. Then GDP deflator formula, that is it can be calculated as GDP deflator is equals to nominal GDP upon real GDP into 100. You know the formula N upon R. Okay, N पहले आता है R बाद में आता है. What is value added in simple words? Difference between value of output and intermediate consumption is known as value added. Then difference between final versus intermediate goods, that is final for consumption purpose and intermediate for resale and production, would be one word answer or one you can say last minute revision. Okay, then difference between stock versus flow. Stock at a point concept होता है calculation and flow over a period of time. Then precautions of income method. Any two include only factor incomes and exclude transfer incomes. Okay, so these are the two precautions. Then transfer income examples: pension, scholarship. Without any rendering any services, you are getting the payment. Okay, so you get pension, scholarship, gifts, allowances, unemployment allowances, etc. Then meaning of NFI in simple words, you just write the meaning, that is the net factor income from abroad, that is the full form. Okay, then mixed income meaning income of self-employed. Then domestic territory meaning economic territory of a country. Then NNP at FC meaning that is the national income. Then personal income meaning income received by household. Disposable income formula, यानी personal income minus direct taxes. Numerical, for example, if wages are given 400 and rent 50, then interest 40, then profit 60 and mixed 30, then NFI is also given 10. The national income, what you will do, you will just calculate NDP at FC first, then you will add क्या करेंगे राइप एम आर रेंट आई इंटरेस्ट प्रॉफिट ओके ई से आपका आ जाएगा मिक्स्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस आ जाएगा एंड एम से आ जाएगा मिक्स्ड इनकम. यू विल ऐड ऑल दीज. ओके, जो भी आएगा उसमें आप ऐड कर देंगे एन एफ आई, राइट. तो एन डी पी एट एफ सी से हम एन एफ आई ए पे इस तरह चले जाएंगे, राइट. वो उस पर एन एन पी एट एफ सी कैलकुलेट कर लेंगे. यू नो इट वेरी वेल. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके एमसीक्यू में, देन यू कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस. एक्सक्लूड सेकेंड हैंड गुड्स एंड वाई. देन ऑलरेडी काउंटेड अर्लियर. क्यों एक्सक्लूड करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स? जस्ट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी काउंटेड अर्लियर. ओके, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए. देन इलीगल इनकम इंक्लूडेड? नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राइट. नॉन मार्केट सर्विसेज इंक्लूडेड? नो, एक्सेप्ट इम्प्यूटेड रेंट. ओके, देन सम ऑफ फैक्टर इनकम्स क्या होता है? नेशनल इनकम होता है. देन सर्कुलर फ्लो एंड कंजम्पशन के चैप्टर से आपके क्वेश्चंस हैं. टू सेक्टर मॉडल, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म कंटिन्यूस फ्लो. ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट को इसको नहीं काउंट करते हैं. ओके, कंसिडर नहीं करते हैं. देन लीकेजेस मीनिंग का क्या होता है? विड्रॉल्स लाइक सेविंग, टैक्सेस, इम्पोर्ट्स. देन इंजेक्शन मीनिंग इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स. ओके, देन एपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, क्रेडिट कंजम्पशन अपॉन इनकम. देन एपीसी फॉर्मूला, अच्छा एपीसी फॉर्मूला इट्स रिपीटेड हियर. ओके, अगेन 24 फिर से यहाँ पे आ गया. 25 वी विल डू. एपीएस फॉर्मूला वी नो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेविंग अपॉन इनकम. देन रिलेशन ऑफ एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? तो आप यहाँ पे पूरा लिख देंगे एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1. देन एमपीसी मीन्स मार्जिनल, इट इज द चेंज. तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. देन एमपीएस का सिमिलरली सेविंग यहाँ पे, तो यहाँ कर देंगे चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम. देन एमपीसी प्लस एमपीएस 1. एपीसी और एमपीसी जब भी ये प्लस करके लिखे जाएंगे दोनों चीज़ें, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है, मतलब एपीसी प्लस एपीएस तो हमेशा 1 के बराबर होगा और एमपीसी प्लस एमपीएस ये भी 1 के बराबर है, राइट. देन मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या हो सकता है? मल्टीप्लायर फॉर्मूला डेट इज के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी भी हो सकता है. के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस भी हो सकता है. ठीक है, एंड चेंज इन
क्या था आपका, दैट इज इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, ओके, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देन न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, एमपीसी फॉर एग्जांपल 0.8 है तो के आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, तो के आपका 5 आ जाएगा, 0.8 अगर है तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 0.8, तो के आपका आ जाएगा 5। देन इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 100 है तो इनकम कितनी होगी, तो इनकम 500 हो जाएगी, राइट। देन डिफरेंस आपका बता देंगे, ठीक है। देन इसमें है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज व्हाट, इक्विलिब्रियम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड इज व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस। देन इन्फ्लेशनरी गैप व्हेन एक्सेस डिमांड एंड इट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन। देन मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन है, मनी मीनिंग दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, फंक्शंस ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ओके। देन M1 का फॉर्मूला क्या होता है, CCDD OD, यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। एंड क्रेडिट क्रिएशन मीन्स बैंक क्रिएट डिपॉजिट्स बाय लेंडिंग एंड एडवांसेस, ओके। देन लिमिटेशंस क्या हो सकती है, CRR, लीकेजेस एंड बोरोवर्स। देन रेपो रेट इज मीन्स RBI lends to banks, okay, the rate at which RBI lends to banks. Then reverse repo rate, RBI borrows from bank. Then CRR का मतलब क्या होता है, cash reserve with RBI. Then SLR means liquid assets with the bank. Then open market operations, that is the RBI buys or sells securities. In short, I'm just giving you the hint, okay. The lender of the last resort, that is RBI, supports bank in crisis. Then legal versus fiduciary bank money, sorry, legal compulsory होता है and fiduciary trust based, okay. Then high powered money, that is currency issued by RBI. Then demand for money motivates what, that is motives transaction precautionary speculative. Then bank rate, long term lending rate of RBI. Then government budget meaning annual income expenditure statement होता है. Revenue receipts, that is non repayable incomes. Then capital receipts, that is credit liability or reduced assets. Revenue deficit when revenue expenditure is more than revenue receipts. Then fiscal deficit, again total expenditure is more than total receipts excluding borrowings. Then primary deficit, fiscal deficit minus interest payments. Then objectives of budget, you can just write allocation of resources, equality and stability. Then direct and difference between indirect tax, that is direct is paid by the same person and its burden by is borne by the same person. Indirect can be shifted. Then disinvestment meaning sale of government share. And balanced budget means receipts equals to expenditure. Then the budget is said to be balanced. Then next question is deficit budget when expenditure is more than receipts. Then surplus budget means when receipts are more than expenditure. Then public debt meaning here means government borrowing. Plan versus non-plan, that is development versus routine expenditure. Then capital expenditure example, that is infrastructure. And the next question is balance of payment from the chapter balance of payment. BOP meaning record of foreign transactions. Then current account includes goods, services and transfers, and capital account includes loans, FDI, assets and liabilities. Then BOT meaning exports minus imports, that is trade, okay. Then BOP means BOP deficit meaning means here payment when payments are more than the receipts. Then exchange rate meaning price of foreign currency. Manage floating rate. In short, we can say that is the market with the RBI control. Then demand for forex, that is foreign exchange factors, imports, tourism, and investment. Then devaluation means government reduces currency value, and appreciation means currency value rises, right. Then next is here currency value depreciation means currency value falls, and foreign exchange reserve meaning foreign currency held by RBI. Then invisible items include services and remittances, and capital flow includes FDI and loans. Then current account deficit effect weakens currency. So watch the full revision playlist for complete preparation and see you in the next video. Keep studying and keep scoring. Thank you for watching.